खुशी नहीं है, खुशी तो तुम्हें कब्र में ही मिलेगी। I remember Pakistani drama being better than the ones that we are watching today. हीरो को बनियान पहना हुआ था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, इसलिए बनियान क्यों? पूल में कौन बनियान पहन के जंप करता है? Thank you for ruining my thought process. So I was saying that female lead used to be happy, she used to be powerful, she used to be successful. Hello everyone, welcome, assalamu alaikum, hello, salam, namaste. We're going to do a really cool reaction / review video of the latest trailer of the latest drama, Talk of the Town, Mitti De Baave, जो कि आने वाला है Green Entertainment पर कुछ ही दिनों में. It's going to go on air in September and they just released their 3.5-minute trailer. So we're going to talk to you about that and tell you our reactions and give you a little bit of more information ताकि जब आप ड्रामे के बारे में बात करें तो आपके पास जो है ना बहुत और जो है मालूमात मौजूद हो. So सामने कैसा लगा आपको? What are your first impressions of the trailer? मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो एक्ट्रेस का बता दो. हाँ, जो इस ड्रामे की जो कास्ट है इसमें of course everybody knows the lead is Myra Khan and she's making a comeback after her not so well received हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामा जो कि हम पे ऑन एयर हुआ था and then she was briefly in a sort of a cameo role in Razia. So which aired on Express. It was a shorter series. So iske baad, this is her much anticipated comeback on mainstream television. And unke saath, this is going to be a first time pairing of Myra with Wahaj Ali. And Mahira plays Bilqis, short for Bilqis. And Wahaj plays Bala, which is short for Iqbal. And it is a revenge saga. साथ में supporting cast में है Junaid Khan, Hina Afridi, Amar Khan, Sohail Ahmed is playing the lead antagonist or villain. And you also have Faryal Mahmood and Nurul Hassan and John Rambo. And if I've missed out someone's name, please Saiba Rambo. ऐसा लिखा है but if I missed out any names please comments में मुझे लिखकर बता दीजिएगा. वो तो बता दिया हमने. इसको लिखा है फायजा इफ्तिखार ने जिनका ड्रामा आप देख रहे हैं एक और मोहब्बत जो चल रहा है ग्रीन एंटरटेनमेंट पर और इसे डायरेक्ट किया है सैयद वजाहत हुसैन ने जिनकी लेटेस्ट ऑफरिंग थी जियो एंटरटेनमेंट पर केस नंबर 9 which was also very commercially and critically acclaimed. So Samne, what were your first impressions after watching the trailer? I understood. जैसे कि मैंने बताया पहले भी बता रहा था मैं तुम्हें कि Myra Khan announced that she does not want to play the typical lead from now on. She's going to play roles that represent her status and age and everything. She said something like this. ठीक है तो अब उसने ऐसा क्लिप मैंने ट्रेलर देखी. ट्रेलर मायरा खान इज अ सुपरस्टार एंड आल्सो उसकी एक्टिंग उसमें अच्छी दिखाई गई है. इट्स सूफी. शी इज अ पीरनी. शी इज लाइक अ मिस्टिक. Yeah, she's playing a पीरनी एंड वो पीरनी हो गई. उसका कोई वो था है मगर थोड़ा मुख्तलिफ है. थोड़ा पावरफुल है. इसमें बहुत पावरफुल पॉलिटिक्स इस किस्म की पीरनी का रोल है. वैसा पीरनी नहीं है जैसे मस्त मलंग मौला टाइप. शी इज लाइक पावरफुल. शी इज प्रोबेबली अ पॉलिटिशियन और अ पॉलिटिशियन मेकर और ब्रेकर और कोई गैंग लीडर टाइप का रोल है. हाँ तो इस किस्म का रोल है. नॉट entirely positive, not entirely negative, somewhere in between. You know, the kind of character that are real. You know, उनमें अच्छाई भी है, उनमें बुराई भी हो सकती है. So you were telling me that Myra said in an interview that she just doesn't want to play the pretty girl and doesn't want to play the heroine. So I noticed that in this trailer, she's dressed simply and she's of course looking great. She's beautiful. So, but she's dressed simply and in like bold, plain colors, and so I really like that. अच्छा जिनको नहीं पता तो मिट्टी दे बावे का मतलब होता है मिट्टी के खिलौने.
So toys made of clay, especially dolls made of clay. और इसकी एक significance है. A lot of Punjabi poets like Shiv Kumar Batalvi and Alam Lahore have used this phrase in folk songs, जो गीत जिन्हें कहते हैं. So since this is set in rural Punjab, it's a story about love, ego, spirituality. तो पंजाबी folklore में मिट्टी दे बावे is actually connected to a folk tale जिसमें a woman is waiting for an absent loved one, and in that waiting, and in during that period of absence and while waiting, she creates a doll, a clay doll, and dresses it and treats it like a child while waiting for the loved one. And also like इसमें longing for a child. तो ये सब कनेक्शन है उसका और उस मिट्टी दे बावे की ये एक कल्चरल फोक Yeah. सिग्निफिकेंस है. और सूफीज्म में यही है कि यू फॉल इन लव, और इश्क जब इंतहा को गुजर जाती है तो वो इश्क के मतलब वो ऊपर चली जाती है, वो अल्लाह के इश्क में, मतलब कोई ऊपर वाले के इश्क में, कोई ऐसे उसके उसमें चली जाती है. थैंक यू फॉर रूइनिंग माय थॉट प्रोसेस. सो आई वाज सेइंग कि सूफी इसमें होता है कि भाई यू फॉल इन लव, एंड व्हेन लव बिकम्स ऐसे एक्सट्रीम पे चला जाता है तो वो एक सुप्रीम बीइंग की तरफ चला जाता है. तो ये है इन अनदर रेल्म, बिल्कुल Yeah. उसमें चला जाता है. The younger versions of Myra and Wahaj, you see them I don't know why hopelessly they in love. needed another actress in to play younger version. No, because she's in her probably in her 40s, right, when this happens. So she's like 16 years old, and obviously Myra is not 16, so they did need a younger actor. And then in 1998 we go to 2002. जो इकबाल है और बाला है वो जेल से छुटकर आता है, and then he reunites with her, and there's a lot of like revenge, and there's a lot of drama and violence, and एक उसमें आप सीक्वेंस देखते हैं where there are बहुत फिल्मी तर्ज पे बना हुआ है, बहुत फिल्मी तर्ज पे बना हुआ है, नॉट लाइक हाँ एक्शन भी दिखाया गया है, सही फिल्म हुए हुए एक्शंस, यू नो. yeah. So it's going to go on air in September. People might just make fun of some of Myra Khan's Punjabi again. I don't know. हो सकता है. I don't think most of it is in Urdu though. I'm looking forward is Urdu in a Punjabi accent of sort. Yeah. I mean, no? they're better because it's like rural Punjab. Yeah. No one speaks fluent Urdu. Yeah, I'm with a- looking forward to what Sahiba might do, because she might be. I'm looking forward to what she's going to do in this yeah. drama, because she's a very old. She's like, she used to be a movie star herself, Right. and she has command over the culture and the Yeah. background of Yeah. what such a culture, you know. Yeah. I saw in Samia Mamtaz. I think Yeah. she is going to most definitely Kill it. kill it without even trying. Yeah. She did really well in the like जो उनके बीबी जान के कुछ सीन्स आए हैं जंजीरे में अभी रिसेंटली, जो ड्रामा आप नहीं देख रहे हैं. मुझसे नहीं देखा गया. Right. The parts that you were trying to make me watch were very hard to watch. Fair enough. So we will Amne and Samne will definitely be reviewing it. I really liked Myra's costume. I like the dance she does in the music video. Acha, apparently Wahaj has put on a lot of weight for this drama. Yeah. Last I think we saw him was in Jinki Shaadi Unki Shaadi. ये हाँ तो पंजाबी characters में he wanted to look Punjabi, you know. And for that he needed to like पहलवान वाला उसका होना चाहिए. He's been in the jail से निकला है. जेल में पहलवानी. हाँ जेल में होती है, जिम विम भी होते हैं, लोग करते हैं थोड़े से, तो probably he was. I don't अब think सुल्तान राही मतलब नहीं, like सुल्तान राही जैसे characters थे. अच्छा ठीक है. Maybe he's inspired by them, but rural पंजाब की जेल्स में जिम नहीं होता है. I don't think we should make such tall claims. नहीं? नहीं जिम होते हैं. Are you sure you're talking about jails in rural Punjab? So I like that there are all these others. I'm really looking forward to seeing Junaid Khan. I really liked his performance in Case Number 9. And what else? I'm not a big fan of violence.
So आमने सामने are definitely going to try and review it. लेकिन अगर बहुत violent हो जाता है और बहुत ही बेतुका हो जाता है तो हमें इसको दिखाना पड़ेगा, सारा इसको दिखाऊंगा क्योंकि she has made me watch a lot of stuff. I'm going to make her watch the entire show no matter what. right. So you can definitely look forward to us reviewing it whenever it is that it Yeah. goes on air next month. Okay, by then we'll be done with these. The ones No, that we're ये भी no. चल रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रहा है. एक ड्रामा कम से कम 3 से 4 महीने चलता है. Okay. आपको 1 महीना हुआ है काम करते हुए और ये हालत है गाइस. आपको और क्या, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द कैमरा वर्क और Filmy, it's very movie like. लार्जर देन लाइफ? Yeah. सो Very. टीवी पे देखना चाहिए, फोन पे मजा नहीं आएगा ना देखने का Uh, लोगों का. yeah. Why do you think such stories are important? Like, what do you think this story, why could it have larger significance? I don't think it will have larger significance. Oh, I don't know. It's just for entertainment Why do you think Indians love because their work is really all the time and I slow. I remember Pakistani drama being better than the ones that we are watching today. Like female lead used to be happy, she used to be powerful, she used to be successful, yeah, she used to be she had a personality. yeah, Like women were not apologetic about their happiness. yeah, Now women, if they're happy, they have to pay the price of like that. for instance what? For all aapki izzat and everything. Like there is, you don't see, they don't show happy women on screen anymore. Happy, funny, Hmm. like women with personalities, like Marina Khan and धूप किनारे. Tanhaya. She was funny. She was Yeah, she and Kabacha were like hilarious. yeah, yeah. And it was a family oriented show, and it's not always about Saas Bahu who is इतना मक्कारी and conniving. दुनिया नहीं थी, इतना manipulative नहीं थी, but सीधे साधे लोग थे, उनका सीधा साधा मसला था. मेडिकल स्कूल में जाती थी, मेडिकल स्कूल में क्या होता था, it's all hilarious, families would want to watch something like this if we come up with it. We just stopped making these happy women, happy people Stories. Especially happy women. We don't, every woman on screen is crying. Yeah, I'm tired of this. yeah. Well, hopefully Myra. She's angry and she's tired. She has all the reason to be angry. She has all the reasons to be tired, Unhappy. unhappy, but we need to find a way to teach people Hmm. that happy women are good women also, they're not selfish if they are happy, you But know. also like that happy women make for interesting stories, Yeah. or that people will want to watch stories about happy women. Happy women, happy people, yeah. Yeah. Happy middle class. Yeah. I actually kind of dread revenge sagas. It's not at all my favorite genre at all. Like even Shakespeare's के जो खेल रहे हैं, उसमें भी जब revenge जहाँ पर होता है वो, I don't at all enjoy violence or revenge. वायलेंस जो हो रहा है माशरे में, रिवेंज एक सीक्वेंस है ट्रेलर में, ठीक है, मैं पूछना चाह रही थी आपसे, जिसमें दो मर्दों के हाथ बांधकर उनको जो है ना ऐसा लग रहा है कि कोई पनिशमेंट मिल रही है. और फ्यूडल ब्रूटैलिटी जो इंटीरियर पंजाब में होता है, वो इस क्या किस्म का है, मतलब punishment हो रहा लाइक होगा ये किसी- क्या है कि जैसे 100 कौड़ों की मार होती है कुछ हाँ, कल्चर्स में, कुछ ट्राइब्स में, तो ये क्या है कि लाइक दे आर जस्ट वेयरिंग देयर just one piece of garment and then Yeah. their other. I think मुझे हैरत हो गई because once I एक स्विमिंग पूल वाला सीन था, Yeah. ठीक है, एंड हीरो को बनियान पहना हुआ था. मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये बनियान क्यों, पूल में कौन बनियान पहन के जंप करता है? Why is he wearing literally he said कि censors do not allow shirtless stuff on television. और यहाँ बहुत occasions पे shirtless दिखाया गया है. हाँ, Yeah. वहाज का एक शर्टलेस सीक्वेंस है. एंड तो- ये तकरीबन
So like maybe it's for the adult audience. Definitely, I don't think that it is for young तो इसका मतलब है teenagers इसको or under 18. टाइमिंग वही रखना चाहिए और हमें चाहिए कि हम अपने for example we are taking these liberties we should write down that it's for older Right. So cautionary warnings, yeah. especially when there's violence involved children should not be watching such Yeah. things Yeah. like you said I think children shouldn't be around violence Yeah. and बिल्कुल normalize हो जाता है ना फिर बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल. what do you have to say about this I feel ke yeah, I mean I share the same point of view. I kind of abhor violence on screen and in life, so it's very difficult for me to watch. And I've watched a lot of dark stuff on other apps and everything. yeah, So I'm okay. platforms. I've learned to develop an interest, but I miss the times when things were Yeah. lighter. Simpler, Sim- happier. Yeah. Yeah, so definitely I hope that दूसरी story इस तरह की stories भी और बताई जा सकें जहाँ पे simple हाँ, like happy stories. गांव के settings भी होते थे. Like हाँ. for example, there was this गांव के सेटिंग सिंधी इंटीरियर गांव के सेटिंग पे होते थे ड्रामेज में वो भी खुश दिखाए जाते थे हाँ. खुशहाली दिखाई जाती अब नहीं दिखाया जाता है सब कुछ मिट्टी दे बावे के ट्रेलर में तो मुझे कोई भी खुश नहीं लग रहा है. कोई लोग या कहीं तो खुश नहीं है आपकी इज्जत में कोई खुश नहीं है दर निजात में कोई खुश नहीं है और जरियाब तो खुश है. जरियाब खुश नहीं है जरियाब इज वरीड अबाउट now you want to me नहीं to नहीं start नहीं right now. नहीं ठीक है. So like nobody is happy. I want happy stuff. Abu Bakar's happy. No? No. No, okay. He has so much इतना इंसल्ट होने के बाद कैसे खुश हो सकता है मुसलसल उसकी बेइज्जती होती है हाँ. अच्छा तो ये है कि भाई इस पूरे ट्रेलर में या तो कोई रो रहा है या मार रहा है या मर रहा है या गोलियां या बड़ी खा बड़ी रहा है. आंखें देखा के बात कर रहा है जैसे अभी किसी को खून करने वाला है I don't think there was a single smiling sequence No. except when we see the younger versions of Yeah. Mahira and Wahaj, Yeah, वो Billo and Bala. बकौल किसी बहुत बड़े सियासतदान के सुकून आपको सिर्फ कब्र में मिलेगा इसका क्या लेना देना है ट्रेलर से मिट्टी दे बावे के? क्योंकि ये जो कुछ हम देखते हैं ना जी. वो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए होता है एक थॉट प्रोसेस बनाने के लिए होता है तो अगर आप सुकून दिखाओगे खुशहाली दिखाओगे तो लोग बिलीव करेंगे कि खुशहाली हमारा राइट है हम खुशहाल हो भी सकते हैं कभी जिंदगी में कभी हम खुश हो जाएंगे जिंदगी बेहतर हो जाएगी जब हम हमेशा केओस दिखा रहे होते तो हमेशा केओस बना रहे होते प्रिपेयर कर रहे होते अवाम को कि भाई खुशी नहीं है खुशी तो तुम्हें कब्र में ही मिलेगी Wow, that's a dark and depressing thought. But on that note, we are making depressing stuff content. Right. Let's hope for happier and more wholesome and holistic stories. And tell us what is exciting about Mitti De Bave for you. Are you going to be watching it? What else should we bring to the table for you? And catch us soon in the. I hope I see dramas where we see happy, independent, working women. On that note, guys, take care. See you. Ciao, ciao.